Hello dear students, in last lecture section B question number 18 is completed. Now next in question number 19. If P of A is equal to P of B is equal to K for two mutually exclusive event A and B, find the A union B. Underline mutually exclusive event. Mutually exclusive, it means mutually exclusive means A intersection B is equal to null set phi and probability is 0. So here P of A and P of B, both the value same. P of A is equal to P of B is equal to K given. So union, law of addition formula for the both event are mutually exclusive. फॉर्मूला हमने जो राइट की थी उसमें लिखा हुआ था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज मीन्स P of A plus P of B. Here write down formula. P of A union B is equal to P of A plus P of B. Value of A and B both are same, constant value is K, so write down K plus K. So P of A union B is equal to 2K. Question number 19, write down. The next question number 20. If P of A dash intersection B is equal to 0.45, A dash intersection B means event B happens, event A does not happen. Okay, different event B minus A, 0.45, and A intersection B is equal to phi, so value is 0. Find the P of B. So write down P of A dash intersection B is given 0.45. A intersection B is equal to phi. It means probability is 0. So formula write down. A dash intersection B is equal to event B happens, event A does not happen. P of B minus P of A intersection B. A intersection B, A dash intersection B is given 0.45. P of B is not given. A intersection B phi, so probability P of A intersection B is 0. Therefore P of B is equal to 0.45. Okay, write down as it is same value 0.45 for the event B.
Next, question number 21. Two events A and B in a sample space are mutually exclusive and exhaustive. Underline mutually exclusive and exhaustive. Okay, mutually exclusive and exhaustive means mutually exclusive and exhaustive means okay, दो पार्ट कर दो. फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. फाइव null set A intersection B, and exhaustive means yes A union B is equal to you prove that. आपको दोनों वर्ड्स पता होना चाहिए, मैंने बोला था. So mutually exclusive and exhaustive means A intersection B is equal to phi and A union B is equal to you prove that. It is called mutually exclusive and exhaustive event. उसकी definition है if A and B are two events in a sample space U, it is proved that A intersection B is equal to phi and A union B is equal to U. That is called mutually exclusive and exhaustive event. If P of A is equal to 1 by 3, then find the P of B. Okay, P of A is given, P of B find out. Mutually exclusive event means intersection phi and union U. U means 1. So P of A union B is equal to 1. Okay, फॉर्मूला जो राइट करवाई थी उसमें देख सकते हो आप. P of A union B is equal to P of A plus P of B is equal to always 1. Mutually exclusive and exhaustive event. Union means only for P of A plus P of B is equal to 1. A intersection B is phi, null set, value is 0. P of A is given 1 by 3 plus P of B is equal to 1. Therefore P of B is equal to 1 minus 1 upon 3. P of B 2 upon 3. Final answer. Write down question number 21. Next, question number 22. 2% item in a lot are defective. It means rest of 98% are non-defective. What is the probability that an item randomly selected from this lot is non-defective? तो non-defective कब होगी? जब 98% में से कोई एक रैंडमली आइटम सिलेक्ट होगी तभी नॉन डिफेक्टिव होगी. टू पार्ट defective 2% item, so non-defective 98%. One item is randomly selected and it is non-defective, तो non-defective में select होगी तभी. Total number of item 100%, यानी कि 100. So P of A M upon N, favorable outcomes non-defective total item is 98 and total number of item 100%, means 100 0.98.
Okay, so write down 2% item, 2% item are defective, it means remaining 98% items are non-defective. New line, n is equal to 100. New line, event A is equal to selected item is a non-defective, write down P of A is equal to M upon N. 98 upon 100, answer 0.98. Okay, next, state the number of sample points, underline sample points, in the random experiment of tossing 5 balanced coin. Okay, bolo, number of sample points tossing 5 balanced coin. कोई कॉइन है उसको 5 टाइम टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ आउटकम्स वही आपके सैंपल पॉइंट्स होंगे. कॉइन पे टोटल आउटकम्स, कॉइन है उसमें आउटकम्स कितने आएंगे टोटल? कॉइन देखा है ना सभी ने, तो उसमें आउटकम्स क्या आएंगे बोलो? 1 to 6 हेड टेल, क्या है उसमें कॉइन में? हेड एंड टेल, 2 आउटकम्स पॉसिबल. टॉस फॉर 5 टाइम्स, so 2 raised to 5, 32 sample points. Okay, so write down the number of sample points, in the random experiment, of tossing 5 balanced coin, is 32. In bracket write down 2 raised to 5. 2 raised to 5. Next, question number 24. State the number of sample point in a random experiment of tossing 1 balanced coin and 2 balanced dice simultaneously. Okay, chalo, 1 balanced coin and 2 balanced dice, total outcomes. चलो, कॉइन में आउटकम्स टोटल 2 एंड डाइस
36, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है 2 डाइज आर थ्रो सिमिलटेनियसली. एंड coin and dice, and means intersection, in other words multiplication. So 2 into 36 with 72. Okay, coin, total possible outcomes 2, head and tail, one time toss, and 2 raised to 1. And means intersection and multiplication. 2 dice throw, 2 dice means total 36 outcomes. यानी कि यहाँ पे आप डायरेक्टली राइट कर सकते हैं कि 1 डाइस पे 6, 2 टाइम टॉस, यानी कि 6 raised to 2. So 2 into 36, total 72 ways. Write down 2 raised to 1 into 6 raised to 2. 2 raised to 1 into 6 raised to 2, 6 square. New line, 2 into 36 is equal to 72 ways. Now answer write down in words. The number of sample points, the number of sample points in the random experiment of tossing one balance coin and two balance dice are 72 ways. Now next 25. Is it possible that P of A is equal to 0.7 and P of A union B is equal to 0.4 for two event A and B in a sample space? बोलो possible या impossible? With reason. Possible or impossible with reason. P of A is 0.7 and A union B is 0.45. First of all, possible or not possible? Reason बाद में बोलो. Possible है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 11 नॉट पॉसिबल. रीज़न पता है सुते? माइनस. क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आंसर मैंने राइट करवाया था. सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 11 आंसर जो हमने राइट किया हूँ. असाइंडिंग ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल 0. नेक्स्ट वैल्यू पी ऑफ A. Next A intersection B. Next A union B. Next P of A plus P of B. यानी आप असाइंडिंग ऑर्डर में जब वैल्यू राइट कर रहे हो तो सबसे पहले 0, उससे ज़्यादा इट मीन्स लेस देन ऑल इक्वल टू क्या आएगा? P of A. लेस देन ऑल इक्वल टू P of A intersection B, less than all equal to P of A union B, less than all equal to P of A plus P of B, and less than all equal to 1. तो मैंने आपको समझाया था.
इसका मतलब वैल्यू P ऑफ ए की ए यूनियन बी से कभी ज़्यादा पॉसिबल है ही नहीं, उसकी जितनी तो होनी चाहिए, क्योंकि P ऑफ ए 0.7 है तो ए यूनियन बी 0.7 इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि बी के ऑल मेंबर इंक्लूडिंग इन सेट ए, यानी कि बी सबसेट ए पॉसिबल हो तो P ऑफ ए लेस देन ऑल इक्वल टू P ऑफ ए यूनियन बी आर ऑल्सो पॉसिबल। डन। लेकिन यहाँ पे P ऑफ ए की वैल्यू 0.7 है, यूनियन की 0.45, ओके 45 पॉसिबल ही नहीं है। डन। तो राइट डाउन, it is not possible that P of A is equal to 0.7, P of A is equal to 0.7 and P of A union B is equal to 0.45 because of P of A does not greater than P of A union B, P of A does not greater than, साइन में नहीं पता चलता इनवर्ट्स में राइट कर सकते हो, P of A does not greater than P of A union B, कभी उससे ज़्यादा वैल्यू पॉसिबल है नहीं। ओके, विथ रूल्स मैंने समझा, आपको असाइनिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करेंगे तो ए यूनियन बी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। टू कार्ड्स आर सिलेक्टेड वन बाय वन विथ रिप्लेसमेंट, अंडरलाइन वन बाय वन विथ रिप्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है? वन बाय वन विथ रिप्लेसमेंट, अंडरलाइन। अर्लियर यूनिट फिर से सिलेक्टेड हो सकता है कि नहीं हो सकता, पॉसिबल है कि नहीं है? ओके, क्योंकि वन बाय वन विथ रिप्लेसमेंट, पहले एक कार्ड सिलेक्ट करेंगे, उसको वापस पैक में रख देंगे, फिर से सिलेक्ट करेंगे कि जो पहले कार्ड सिलेक्ट हुआ है वो फिर से सिलेक्टेड पॉसिबल है विथ रिप्लेसमेंट। अर्लियर यूनिट repeated for the second time. State the number of elements in a sample space of this random experiment. Okay, number of elements in sample space of this random experiment. तो क्या आएंगे number of elements? बोलो। 52 कार्ड्स में थे, 2 कार्ड्स, वन बाय वन विथ रिप्लेसमेंट आप फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इट मीन्स n, क्या आएंगे? किस तरह से सिलेक्शन करोगे? कार्ड कितने सिलेक्ट करने हैं? 2, वन बाय वन। 52 में से एक कार्ड सिलेक्ट किया, वापस रख दिया, फिर से 52 में से एक कार्ड सिलेक्ट किया, यानी कि 52 C1 इंटू 52 C1, टोटल आउटकम्स ए ही आएंगे। इस तरह से सिलेक्शन होगा। तो एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 52 कार्ड्स में थे, 1 कार्ड रेंडमली सिलेक्टेड, एंड फिर से वही 52 में से 1, सो 52 इंटू 52 2704। ओके, राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल n इज इक्वल टू 52 C1 into 52 C1 52 into 52, total number of elements 2704. Write down last answer. 2 cards are selected, 2 cards are selected one by one with replacement, one by one with replacement
from 52 cards, the number of elements in the sample space of this random experiment are 2704. Next, question number 27. For two independent event, underline independent event A and B, P of B given that of A is equal to 1 by 2. Okay, B given that of A is given value 1/2, and P of A intersection B is equal to 1 by 5. Then find the value of P of A. Okay, P of A find करने में तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला राइट डाउन क्या है, P of B given that of A is equal to P of A intersection B upon P of A. P of B given that of A is equal to P of A intersection B upon P of A. P of B intersection A 1/2, आप 0.5 भी राइट कर सकते हो. P of A intersection B 1/5, 0.2 divide by P of B. Opposite side numerator, P of B is equal to 1/5 divided by 1/2. डेसिमल में राइट करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा. P of B is equal to 0.4. check it. P of A upon A, value of P of A write down here. P of A is equal to 0.4. आपको नहीं पता था तो आप डेसिमल में आंसर कन्वर्ट कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा. ओके 0.4. And last question number 28. 1998 tickets out of 2000 tickets do not have price. इसका मतलब प्राइस वाले टिकट कितनी है, 2 tickets are eligible for prize. If person randomly select one ticket from 2000 tickets, then what is the probability that the ticket selected is eligible for prize? चलो टिकट eligible for prize, तो probability क्या होगी 2/2000. फेवरेबल आउटकम्स क्या है, तो 2 ही टिकट एलिजिबल फॉर प्राइज है, उसमें से एक टिकट सिलेक्ट होगी 2C1, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2000 में से एक टिकट सिलेक्ट करनी है, यानी कि 2000C1. राइट डाउन n इज इक्वल टू 2000C1 n is equal to total ways
2000. New line, write down. Event A is equal to selected ticket is eligible for prize new line. Favorable outcomes of event A is favorable outcomes of event A is, write down M is equal to 2C1, क्योंकि टोटल 2 टिकट ऐसे जो एलिजिबल फॉर प्राइज यानी उसमें से एक सिलेक्ट होगी. M is equal to 2. P of A find out, M upon N, 2 upon 2000. Okay, so you are completed for section B. Next, section C. फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन, देखो 11 डिफाइन जो राइट कर उसमें से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड यूनियन इवेंट, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, एग्जॉस्टिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री. गिव द इलिस्ट्रेशन एंड फाइनाइट इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, वो भी अंडरलाइन करवाया है आपको. तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th क्वेश्चन है वो कैंसिल कर दो. स्टेट द एजप्शन ऑफ मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 5, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 भी नहीं है, लिमिटेशन कैंसिल कर दो. ये लास्ट आपको जो टॉपिक मैंने बोला था मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, वो आपके सिलेबस में नहीं है. ओके, स्टैटिस्टिकल नहीं है, सॉरी. क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल कर दो, 5, 6 है दोनों, एजप्शन एंड लिमिटेशन. क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल कर दो. 8, 9, 10, ओके, बाकी सभी है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. ओके, P of A is equal to 1/3. P of B (2/3) and P of A intersection B 1/6. Then find P of A dash intersection B dash. चलो किस मेथड से फाइंड करेंगे बोलो. नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन फॉर्मूला पूछना स्टार्ट कर देंगे. ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, फॉर्मूला बोलो. यस, इंटरसेक्शन हो तो यूनियन होल डैश एंड यूनियन हो तो इंटरसेक्शन होल डैश. यानी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट यूनियन, P of A, P of B and intersection, all three information given. So first of all using law of addition for the two events. देखो इस तरह से P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. वैल्यू
P of A 1 upon 3 plus P of B 2 upon 3 minus A intersection B 1 upon 6 LCM. So first value 1 upon 3, denominator multiply by 2, numerator also multiply by 2, 2 ones are 2. Second value 2 upon 3, denominator multiply by 2, numerator also multiply by 2, 2 twos are 4 and minus 1. Third value 1 upon 6 LCM. 2 plus 4 6 minus 1 5 upon 6, value of P of A union B. Next, find out P of A dash intersection B dash. Both events are not possible. P of A dash intersection B dash is equal to P of A union B whole dash, complementary event of union. Dash means complementary event, so 1 minus P of A union B. 1 minus P of A union B, answer is 5 upon 6. 1 minus 5 upon 6. 6 LCM, 6 1 is 6 minus 5 upon 6. 1 upon 6 P of A dash intersection B dash. Event A and B both are not possible. It is called A dash intersection B dash. Write down. Next, question number 13. If P of B is equal to 2P of A given that of B is equal to 0.4, both values same 0.4, then find P of A intersection B. So using formula complementary event for the A given that of B. P of B is equal to 2P of A given that of B is equal to 0.4. Okay. Second value covered, so P of B is equal to 0.4. First value covered, so 2P of A given that of B, A given that of B is equal to 0.4. 2 multiplication, opposite denominator, P of A given that of B is equal to 0.4 upon 2. P of A given that of B is equal to 0.2. Using formula for conditional probability, P of A given that of B is equal to P of
A intersection B upon P of B. आपको क्वेश्चन में बोला था फाइंड द A intersection B. P of A given that of B, value is 0.2. Intersection find out A intersection B. Value of P of B 0.4. Denominator left hand side, numerator multiplication. So 0.2 into 0.4 is equal to P of A intersection B. Therefore P of A intersection B is equal to 0.08. Okay, write down question number 13. Okay, next question number 14. If the event A and B are independent event, underline independent event, 3P of A is equal to 2P of B is equal to 0.12, then find P of A intersection B. Okay, formula for P of A intersection B is equal to P of A into P of B, independent event gain. Write down 3P of A is equal to 2P of B is equal to 0.12. So second step covered. यानी क्या होगा 3P of A is equal to 0.12. 3 multiplication opposite side, denominator. P of A is equal to 0.12 upon 3. Therefore value of P of A 0.12 upon 3, 0.04. check it. Okay, now next first step covered. So 2P of B is equal to 0.12. 2 multiplication opposite side, denominator. P of B is equal to 0.12 upon 2. Therefore value of B is 0.06. Okay, now next find A intersection B. Event A and B both are independent event. Independent means multiplication
So P of A into P of B. Value of P of A 0.04 into value of B 0.06. So answer 0.0024. Check it. 0.0024 P of A intersection B. Write down question number 14. Next, question number 15. If 5P of A is equal to 3P of B is equal to 2P of A union B is equal to 3/2. For two events A and B, then find P of A dash union B dash. Okay, P of A dash union B dash formula. Yes, P of A intersection B whole dash